वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास +2 के चैप्टर नंबर 1 में से एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के। सो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच सेज एक फंक्शन है, उसका जो डोमेन है इट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड कोड डोमेन इज रियल नंबर। एक फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन फंक्शन की है 9x² + 6x - 5। वी नीड टू प्रूव दैट f इज नॉट इनवर्टिबल। हमें शो करना है कि f इनवर्टिबल नहीं है। फिर उसके बाद कहता है मॉडिफाई ओनली द कोड डोमेन। At the end, we have to modify the codomain for this function to make it invertible। यानी उसके अंदर क्या आप चेंजेस करना चाहेंगे जिससे ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल हो जाए। और फिर कहता है उसका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए और फिर ये दो वैल्यूज। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि सबसे पहले किसी भी अगर फंक्शन को हमें चेक करना है कि इन्वर्टेबल है या नहीं, तो हम चेक करते हैं कि क्या वो फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू है या नहीं, यानी उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना कंपल्सरी है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो चेक करते हैं पहले हम, लेट अस चेक 1 to 1 कंडीशन ऑफ द फंक्शन। अब हमें मालूम है 1 to 1 चेक करने के लिए व्हाट वी यूज टू डू, हम मान लेते थे कि सम f of x1 इज इक्वल टू सम f of x2। अगर वहां से x1 और x2 इक्वल आ जाते थे तो पक्की बात है वो फंक्शन 1 to 1 होता था। तो लेट्स चेक इट आउट। लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। Now your f of x is 9x² + 6x - 5. So it will be 9x1² + 6x1 - 5 is equal to 9x2² + 6x2 and -5. Now this two terms are already cancelled. We'll take out 9x1² - 9x2² is equal to 6x2 - 6x1. Now we can take out 9 common. x1² - x2² is equal to 6 common x2 - x1. Clear? Now it can be written as 9x1 + x2 into x1 - x2 minus 6 x2 - x1 is equal to 0. If I take out this, now if I do this positive, it will become plus and minus x1 - x2. From both of them we can take out x1 - x2 common. So x1 - x2 is common, and what is left inside? It is 9 into x1 + x2 plus 6 is equal to 0. Product of two numbers is equal to 0. So either this will be 0 or this will be 0. But if we see the domain is a positive number, this can never be equal to 0, as x1 x2 belongs to 0 to infinity. It implies 9x1 + x2 + 6 is never equal to 0. Then automatically what will be equal to 0? It implies x1 - x2 is equal to 0. So x1 is equal to x2. It implies the given function is 1 to 1. The given function is 1 to 1.
So the first part of this question is over. Now we need to check whether the given function is onto or not. The one is clear, I am hopeful. So to check the given function is onto or not, what we do? We find out the value like कि f of x को we take as y और उसके बाद इस पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करके हम किस तरीके से बना लेते हैं that it should be the value in terms of x. I hope it is clear. So what we'll do, this will become y is equal to, can I take out 9 as common? It will be x square plus 6 by 9x minus 5 by 9. I hope you remember completing the square method. So we will do completing the square method here. Y is equal to 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9. Half of this, इसका half करेंगे, it will be 1 by 3. Coefficient of x का half will be 1 by 3. So 1 by 9 add, 1 by 9 subtract, plus 2 by 3x plus 1 by 9 minus 1 by 9 and minus 5 by 9. Now this, after multiplying this by 9, what we will get? Y is equal to 9x square plus 6x plus 1 minus 1 minus 5. Now just see this, 9x square plus 6x plus 1. What is the value of this? It will be 3x plus 1 whole square. You can check it out. So this has become 3x plus 1 whole square minus 6. I hope it is clear. So this will become y plus 6 is equal to 3x plus 1 whole square. Now this will become under the root y plus 6 is equal to 3x plus 1. Now this will become root y plus 6 minus 1 is equal to 3x. Root of y plus 6 minus 1 by 3 is equal to x. Now you can see that we have converted this in terms of x. If it is completely defined on the codomain, then it implies it is onto. Now we know that if y plus 6 will become negative, the value of y means the value of y will come from here. आपको मालूम है जो y का मतलब है कि जो हमारी वैल्यूज कोडोमेन में है, क्या उसकी कोई प्री इमेज है? तो वैल्यू ऑफ y विल कम फ्रॉम द रियल नंबर. अगर मैं यहां पर रियल नंबर y की जगह पर -7 रख दें, so it will be negative in the root. That's not possible. It implies the given function is not defined on values less than 6. Less than 6. 6 से छोटी वैल्यूज के लिए डिफाइंड ही नहीं है. देखिए 6 से कोई भी छोटी वैल्यू ले आप, उसके लिए ये डिफाइंड नहीं है. सो इट इज नॉट ऑन. अब ये पार्ट हमने प्रूव कर दिया. प्रूव दैट एफ इज नॉट इन्वर्टेबल. हमने ये प्रूव कर दिया. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. दे आर आस्किंग अस मॉडिफाई ओनली द कोडोमेन. इस कोडोमेन यानी इस रियल नंबर को किस तरीके से मॉडिफाई करें कि ये ऑन टू हो जाए. अब ऑन टू होने के लिए सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर क्या है? 0. अब इसमें 0 कैसे आ सकता है? x की वैल्यू 0 कैसे आ सकती है? इफ दिस विल बिकम 1,
means when y plus 6 is equal to 1 means y is equal to 1 minus 6 means y is equal to minus 5. If y will be minus 5, this x will be 0. सबसे छोटी वैल्यू इसकी यही आएगी, इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं हो सकती. इट इंप्लाइज ये सबसे छोटी वैल्यू है y की, तो बाकी सभी वैल्यूज इससे बड़ी होनी चाहिए. इसका मतलब अगर मैं इसको यहां मॉडिफाई कर दें, सो मॉडिफिकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ कोडोमेन is minus 5 is included, minus 5 to infinity. क्लियर है बात? और दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहें इसको, तो इट हैज टू बी मोर देन minus 6 और it can be minus 6 also, greater than equal to minus 6. minus 6 फिर भी कहीं ना कहीं क्या होगा, नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि अगर कुछ छोटी वैल्यू आई तो नेगेटिव टर्म आ जाएगी. नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो जीरो पॉसिबिलिटी आपने चेक करी कैसे आएगी. तो माइनस 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसकी कोडोमेन को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई. नाउ द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड. y की वैल्यू अगर माइनस 5 से इन्फिनिटी के बीच में लेते हैं, इट इज कंप्लीटली डिफाइंड ऑन दिस कोडोमेन. नाउ under root y plus 6 minus 1 by 3 is well defined on minus 5 to infinity. It implies it is invertible. It is onto, so is invertible. इसका मतलब invertible हो गया. So what will be the inverse? This is the inverse. Inverse को कैसे लिखेंगे? F inverse x में लिखते हो तो इट विल बिकम अंडर रूट x प्लस 6 माइनस 1 बाय 3. y में लिखते हो यानी f इनवर्स y लिखोगे तो इट विल बी y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3. इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप x में लिखना चाहते हैं, y में, z में, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है. कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वापस दोबारा x में आ गए, ये भी x में है, ये भी x में. That's a variable, no issues. आप कैसे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, that depends upon you, कि आप उसको किस वेरिएबल के टर्म में लिखना चाहते हैं. नेक्स्ट, उसके बाद उसने दो और बातें पूछी हैं. फाइंड f इनवर्स 43 एंड f इनवर्स 163. So what will be f inverse of 43? Means at the place of x 43 will come. 43 plus 6, that's 49. 49 square root is 7. 7 minus 1 is 6. 6 by 3 is 2. So the value is 2. 163. 163 plus 6 means f inverse 163. 163 plus 6 is 169. 13. 13 minus 1, 12. 12 divided by 3, that's 4. So the value of f inverse 43 is 2 and f inverse 163 is 4, and the modification in the codomain is minus 5 to infinity. Now let's take question number 11. Question number 11 says function है, domain is r plus means positive real numbers and codomain is minus 9 to infinity. Means y की value minus 9 से start हो सकती है. So you can see it will never be negative if y is minus 9. So f of x is this. Prove that f is invertible. Means we need to show that f is 1 to 1 and onto. So we'll start off with the solution. You can write, we know that any function to be invertible, it has to be 1 to 1 and onto. So we'll start 1 to 1. सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1. 1 1 के लिए f of x1 is equal to f of x2 पुट किया. अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो डेफिनेटली इट विल बी 1 to 1. So वैल्यू पुट करते हैं, इट विल बिकम 5x1 square plus 6x1 minus 9, 5x2 square plus 6x2 minus 9.
these two terms are cancelled. We'll take this on the left hand side. 5x1 square plus 6x1 minus 5x2 square minus 6x2 is equal to 0. From here, we'll take out 5 common. x1 square minus x2 square. From here, we'll take out 6 as common. x1 minus x2 is equal to 0. From first two terms, x1 and x2 are common. So x1 minus x2 is common. What is left? 5 into x1 plus x2 and plus 6 is equal to 0. Now, my domain is the real positive numbers. So it means this can never be 0. It implies 5 x1 plus x2 plus 6 is not equal to 0. It implies x1 minus x2 is equal to 0. So x1 is equal to x2. It implies f is 1, 1. Now the second part, onto. We'll check the function is onto or not. Y is equal to 5x square plus 6x minus 9. So y is equal to 5 is common, x square plus 6 by 5x minus 9 by 5. Y will be 5. X square plus half of the coefficient of x is 3 by 5. Uska square add and subtract 6 by 5x plus 9 by 25 minus 9 by 25 and minus 9 by 5. This will become x plus 3 by 5 whole square. Y is equal to 5 into x plus 3 by 5 whole square minus common 25, 9 plus 45. So this has become y is equal to 5 into x plus 3 by 5 or 5x plus 3 by 5 whole square minus 54 by 25. Or I can write 5x plus 3 whole square by 25 minus 54 by 25, or I can add this and because the LCM is same. Now we'll multiply it by 5, so it will be 5x plus 3 whole square minus 54 by 5. Now cross multiply, it will become 5y plus 54 5x plus 3 whole square. Square हटाएंगे, it will become under the root 5y plus 54 is equal to 5x plus 3. This 3 on this side, under root of 5y plus 54 minus 3 by 5 is equal to x. Means f inverse y. And we know that it is well defined on minus 9 to infinity. It implies it is onto. So the given function is invertible and f inverse y is equal to under root 5y plus 54 minus 3 by 5. So these two questions, if you face any kind of difficulty in any other question, do tell me. I'll try to help you out. Thank you very much.